Hello, and assalamu alaikum. Welcome to GRC Reviews. And today we've been joined by a very special guest. It's none other than the former Pakistan cricketer and commentator Bazid Khan. Assalamu alaikum, Bazid Bhai. Thank you so much for joining us today. How are you? I'm very good, thanks. And thanks for having me. Oh, it's wonderful to have you here. I've been trying for the longest time to talk to you. So finally, today is the day. And so first of all, Bazid Bhai, congratulations on a very good win. The Galle test, Pakistan took the test, and it seems like they took it with quite ease. So how are you feeling about that? After a disappointing year, we had quite a few games in Pakistan, which everybody was hopeful that Pakistan in the home series Pakistan would perform, but it was slightly disappointing for most of us, for all of us. But yeah, the start of the new Test Championship cycle with a win, I think it was a very good win. Obviously, after losing the toss, but you always felt that Pakistan was a stronger team. Absolutely. And how do you see Pakistan batting in this game? Because ये एक बहुत topic of discussion जो है रहा है. The batting, we have seen a very different approach. We saw in the first innings, the top three didn't really score much. Number three position still a question mark. But then came in Saud Shakeel and Salman Agha and did something that I don't think any of us expected them to do. So what was different about their approach as compared to the top three? And how are you looking at this new way of Pakistan stepping into the modern day Test cricket? Look, Zaira, everybody's excited about the new way of playing baseball. I think now they've termed, I certainly thought that they've termed it Bobby ball now, the way that Pakistan will approach this. But the thing, एक चीज ये है कि when you play ultra aggressive, you need to have the conditions to do that. If the ball's spinning, if the ball's turning, or if the ball's seaming around and swinging, फिर जो ultra aggressive is certainly taking a very high risk approach. So high risk approach with conditions which don't suit is not a batting surface, then that becomes the problem. So yes, you want intent, yes, you want to be aggressive and want to score, but keeping that in mind, you need to be aware कि हमारे scoring areas on a particular pitch or हमारी scoring shots on a particular pitch which are high percentage or which are very risky. So the one thing that stood out in that partnership, Saud Shakeel, he built his innings like a perfect test match inning. So शुरू में स्लो खेला, उसके बाद he got runs quickly. Then again, like हर टेस्ट इनिंग्स में ना ebb and flow होता है. कभी ऐसे नहीं होता कि आप बड़ा 100 करें, मोस्टली ऐसे नहीं होता कि आप बड़ा 100 या 200 करें, तो उसमें एक ही रिदम, एक ही स्टेडीनेस से आप स्कोर करें. कभी ज्यादा तेज स्कोर होता है, कभी कम स्कोर होता है, but he always looked in control. The other thing that stood out, you talked about the partnership, the other thing that stood out was they were able to rotate strike. So in between all those big shots, there was never a sense that Salman Agha ya Saud Shakeel were facing a particular bowler, एक bowler की 5 बॉलें खेलनी या 6 बॉलें, ऐसे नहीं हो रहा था. They were able to rotate strike, and especially about Saud Shakeel, one of the best, probably the best, but one of the best players of spin that Pakistan produced. There have been plenty, but one of the best in recent times was Yunus Khan. Now, everybody talks about Yunus Khan playing his sweep shot, which was one of his preferred shots against spinners. But उसकी जो short game थी ना, जिसके काफी लोग बात नहीं करते, वो इतनी attractive बात नहीं है, but short game ये होती है कि आप you're able to get sort of ऑफ साइड पे ऐसे मनूवर करके सिंगल कर लिया, लेग साइड पे सिंगल कर लिया. आपने साउथ शकील में ये देखा होगा, he played the sweep shot, but in between he was able to maneuver the bowling into gaps, sort of square of the wicket offside or square of the wicket leg side, or pick the gaps and rotate strike, which coupled with obviously his intent of getting boundaries, that मतलब वो supplement कर गया उसकी batting बहुत ज्यादा. Or like it was his first away test as well. This is a very like a big point as well. कि first away test में पहली innings में he became a double centurion.
Such a good, he's playing with such a good average right now. So if you had to describe his batting performance in one word, what would that be? I think it was very, the word I would use would be mature. Now, कहते हैं कि जी बड़ा यंग है टेस्ट मैच क्रिकेट, बट जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो खेला है पिछले 8 साल से, और मेरे ख्याल 60 कुछ उसके मैचेस हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो ही इज लर्नड हिज क्राफ्ट, ही इज कम थ्रू द प्रोसेस. काफी दफा ऐसे होता है कि जल्दी प्लेयर आ जाता है. आई एम ऑफ द बिलीफ के जल्दी से बेहतर है कि लेट प्लेयर आए इनटू द पाकिस्तान टीम, लेट एज इन बाइड हिज टाइम, और साउथ शकील हैज गॉन थ्रू ऑल दैट प्रोसेस. और आप जब वो बैटिंग करता है तो दैट रिफ्लेक्ट्स that process, because he knows how to score runs, and for a batter to be good at test match cricket, or to be able to succeed at test match cricket, he needs to know his own game, and I think Saud Shakeel knows his strength and he's very comfortable with that. Or wahi process of how to make runs, which he's learnt over the years, over the process, over a span of 8 years in first class cricket, that has he's brought straight into test match cricket. तो test match cricket में जब वो आया तो he's never looked out of place. Absolutely. And और आपने बात की सलमान अली आगा की भी, he has been a major find for Pakistan. He kind of fixes the problems that we've been seeing for a while, and he's the missing part of that puzzle. So is he the perfect all-rounder right now in the red ball cricket that we have for Pakistan? देखिए सलमान अली आगा, when he came into the side, I wasn't convinced with his selection into the side, but जहां जब उसको खिलाया गया है, he's been able to adapt and perform. I think he's मेरी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ज्यादा अच्छा खेल गया है वो, लेकिन अगेन विद हिम एज वेल, वो मेरे ख्याल 2 साल पहले वो 10 साल खेल चुके हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट. सो अगेन ही नोज हिज क्राफ्ट एंड ही वाज ब्रॉट इन के जी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, बट every situation that he's been put in, he's been able to come up with the answers and come up with runs. So the other thing that stands out with him is that he can handle pressure, and he has the temperament stands out exceedingly well. Now इधर situation ऐसी थी कि 100 पे 5 आउट थे, लेकिन पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी थी, मतलब अप्रोच पॉजिटिव होनी थी, and he carried that out. बट उसकी गेम ऐसी है कि अगेंस्ट स्पिन स्पेशली, वो भी उसको पता है हिज स्कोरिंग एरियाज, एंड वो भी उसको अपनी क्राफ्ट का पता है. सो दैट्स व्हाई ही कैन गो थ्रू द गियर्स. और बहुत रिफ्रेशिंग थी. आप बैटिंग को छोड़ें, उसने बॉलिंग में कंट्रीब्यूट किया, तो परफेक्ट मैच था उसके लिए. एग्जैक्टली और मतलब बॉलिंग में कंट्रीब्यूट किया, तो उसी की बात अब करते हैं आगे के सलमान अली आगा की जो कंट्रीब्यूशन थी स्पिन डिपार्टमेंट में, वो काफी मतलब इम्पैक्टफुल रही है. लेकिन अगर हम बाकी ओवरऑल स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें पाकिस्तान की, दैट्स बीन अ वरी फॉर अ व्हाइल. देयर आर नॉट ऑफ स्पिनर्स कमिंग थ्रू द डोमेस्टिक सर्किट. मतलब एटलीस्ट हमें इस वक्त इस लेवल पे, नेशनल लेवल पे नहीं नजर आ रहे हैं. We have Abrar Ahmed, who's been exceptional. His start of his career was really, really good, and he's been really good in this test as well. But it's the Numan Ali question that I'm hinting towards. Do you see him playing? कितने साल वो और खेल सकते हैं पाकिस्तान के लिए? How effective do you think he's going to be for the rest of this World Test Championship cycle? देखिए हिज इफेक्टिवनेस वो सेकंड इनिंग्स में आपको नजर आए, जहां पे स्पिनर्स को सपोर्ट मिल रही हो, जहां पे बॉल स्पिन हो रहा हो, ही इज वेरी एक्यूरेट. एंड ऑब्वियसली लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो वो उसका एंगल ऐसा बनता है कि बहुत वाइड ऑफ द क्रीज से आता है. तो इफ द बॉल इज स्पिनिंग, ही जस्ट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ स्पिन. और क्योंकि वो, आई थॉट कि इस पिच पे स्पेशली यू नीडेड टू बी फ्लैटर रादर देन स्लो इट अप. सो वो जरा तेज बॉलिंग करता, तो उसको सूट कर रहा था पिच एंड द कंडीशंस, स्पेशली इन द सेकंड इनिंग्स. स्पिनर्स की काफी, मतलब आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान हैज नॉट बीन प्रोड्यूसिंग स्पिनर्स, बट इसका जवाब बहुत लंबा हो जाएगा. इट्स एवरीथिंग, मेरे हिसाब से, शायद लोग नहीं मानते, लेकिन मेरे हिसाब से एवरीथिंग इंटरकनेक्टेड. तो ये नहीं होता कि स्पिनर्स नहीं आ रहे, फिर आप पूछते हैं कि क्यों नहीं आ रहे, तो देन यू हैव टू गो बैक एंड थिंक के क्यों नहीं आ रहे. तो मेरे हिसाब से ये हुआ कि
say from the 2000s to before Ihsan Mani and Wasim Khan came into the PCB, तब तक 2015-16 तक, or even slightly later, the pitches in first class cricket didn't allow spin bowling. The pitches were made for medium paces. तो जब स्पिनर्स की बारी आती थी तो स्पिनर्स हैड रोल के आपने बॉलिंग करनी है लेकिन आपने रन्स नहीं देने, कंटेन करना है, दैट्स इट. बिकॉज स्कोरिंग, मतलब ओवरऑल पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो टोटल स्कोर हो रहा था वो दुनिया में सबसे कम था, दुनिया में सबसे कम था. एंड मीडियम पेसेस, फास्ट बॉलर्स गेटिंग विकेट. स्पिनर आता था 3-4 ओवर करना है क्योंकि टोटल स्कोर ही 150 हो रहा है या मैक्सिमम 200 हो रहा है, तो उसको बॉलिंग की क्राफ्ट आती नहीं थी. स्पिनर एंड अ बैटर नीड टाइम टू डेवलप. अब जब पिचेस चेंज हुई हैं, वो अब से चेंज हुई हैं. जब वसीम खान और ihsan मानी आए हैं, उन्होंने पिचेस पे फोकस किया और उनको चेंज किया है. वी गॉट फ्लैटर पिचेस in first class cricket where spinner does come into play. उसके रिजल्ट्स फौरन नहीं आ सकते. उसका मतलब आप अगर आज आप पिचेस चेंज करते हैं या आज आप कुछ चेंज करते हैं तो उसका रिजल्ट डाउन द लाइन 5-6-7 years लगेंगे. तो ये जो हम बात करते हैं ना कि स्पिनर्स नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इतने साल आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अलाउड, मतलब इट वाजंट बिल्ट फॉर स्पिनर्स. एक आधी एक्सेप्शन आ जाती है बट द एक्सेप्शन ओनली प्रूव्स द रूल. एक्सेप्शन को आप देख के ये नहीं कह सकते कि जी हम स्पिनर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. सईद अजमल जब थे तो आप कहते जी हमारे स्पिनर्स बहुत, दैट इज एन एक्सेप्शन. यासिर शाह थे, तो अब यासिर शाह के बाद यू लुक एट लेग स्पिनर्स और आप सोचते रह जाएंगे, एक आधा नाम नहीं आएगा उसामा मीर, उसके अलावा आप लेग स्पिनर्स ढूंढते रहेंगे. सो द प्रॉब्लम रन्स डीपर. सारे टेस्ट क्रिकेट में जब हम बात करते हैं तो वो सारा फोकस आ जाता है टेस्ट मैच में क्यों नहीं आ रहा. तो आपको पीछे जाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्यों नहीं आ रहा. अगर वहां से पीछे से नहीं चलता है तो टेस्ट मैच क्रिकेट में आप इंपोर्ट तो नहीं कर सकते. यू कांट गेट एन ओवरसीज टू प्ले फॉर यू. आपने तो यहीं से प्लेयर लेके आना. बिल्कुल. और हमने देखा है कि पाकिस्तान की स्पिन एक्चुअली वाजंट दैट बैड, माइट हैव बीन एग्जैजरेटेड अ लिटिल बिट बिफोर द टेस्ट, लेकिन जो रिजल्ट हमने देखा है, if you talk about the wickets column, they did get decent amount of wickets as well, especially Salman Iliaga did. लेकिन उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो पाकिस्तान की फील्डिंग का भी था. We saw some exceptional catches, some brilliant catches that we might have never seen before, at least पाकिस्तान टीम की तरफ से. अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, स्किपर बाबर आजम, सबकी तरफ से बहुत एक्सेप्शनल कैचेस आपको देखने को मिले. What has changed? ये स्विच अप जो हमने देखा है पाकिस्तान फील्डिंग में, ये कहाँ से आया? व्हाट्स द सोर्स? नहीं, ऐसी एक्सेप्शनल वन ऑफ ही होता है. आई डोंट थिंक कि इतने साल, मतलब हमने कल आज भी एक ग्राफिक देखा था कि इतने सालों में 18 कैच एक टेस्ट मैच में होना वेरी रेयर. इट वाज वन ऑफ दोस टेस्ट मैचेस जहाँ पे हर कैच पकड़ा जा रहा था. द अमेजिंग थिंग वाज कि जो क्लोज इन कैचेस थी उसकी जो क्वालिटी, जो अब्दुल्ला शफीक ने जो कैच पकड़ा है, इसने एक रावलपिंडी में भी पकड़ा था इसी किस्म का कैच, लेकिन that was exceptional. That's not something you can teach, or that's not something you can rehearse. But I think fitness levels का बहुत इसमें रोल है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो स्लिप कैचिंग है वो कंसंट्रेशन लेवल्स आपके बहुत ऊंचे होने चाहिए. जो शॉर्ट लेग पे कैचेस हैं, अगेन कंसंट्रेशन लेवल्स बहुत ऊंचे होने चाहिए. एक टेस्ट मैच पे अब ये तो नहीं कह सकते हमारी फील्डिंग टोटली चेंज हो गई है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जब जब मिकी आर्थर इन्वॉल्व हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, द फर्स्ट थिंग दैट ही फोकसेस ऑन इज फील्डिंग. और मेरे ख्याल एक पहले जब थे तो ये इनके साथ स्टीव रिक्सन थे, तो पाकिस्तान की फील्डिंग में वाजे इंप्रूवमेंट आई. ये शायद, मतलब वेरी अर्ली टू से कि जी इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मिकी आर्थर, लेकिन इट इज समथिंग कॉमन. और मतलब होता ऐसे ही है, whenever he is in charge, पाकिस्तान फील्डिंग लेवल डज गो अप. इसका मैं आई एम नॉट कंप्लीटली कन्विंस, क्योंकि अभी अभी आए हैं तो आप ये नहीं कह सकते नहीं जी मिकी आर्थर ने किया है. बट ये बात जरूर है कि आई थिंक ऑन अ फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक पाकिस्तान में इतनी फिट और मतलब फिजिकली फिट टीम मेरे ख्याल अब के लिहाज, मतलब आप यू गो बैक, लेकिन उस लिहाज से शायद ये फिटेस्ट टीम है.
Absolutely. And speaking of early to say, एक और चीज हमने देखी different from Pakistani team was their strike rate while batting. That was a very good, I would say very pleasant change जो हमने देखा है पाकिस्तान टीम के अप्रोच के अंदर. यूजुअली यही होता था कि आपके बैटर्स जो हैं वो if there was a couple of wickets would fall and they would go back into their shell. We didn't see that this time. So would you say it's still early to say that Pakistan has changed their approach, or do you see this narrative that has come forward called the Pakistan way working for Pakistan in the future as well? हाँ मतलब yes, they're talking about getting मतलब proactive and scoring more runs, but इसमें भी we have to be very savvy about this, क्योंकि एक तो अब जैसे बैस बॉल है तो बैस बॉल की में सारे सोल्ड हैं, ऑल द ईसीबी एवरीबडी इज सोल्ड, सो उनको लीवे मिलता है कि चलें जी आप ये हाई रिस्क खेल लें, एंड एज लॉन्ग एज दे गेटिंग रिजल्ट्स अभी तक वो यूफोरिया चल रहा है. आई थिंक इफ दे हैड लॉस्ट द एशेज, अभी एशेज तो हो रही है, लेकिन इफ दे हैड लॉस्ट द एशेज 4-1 या इवन 5-0 फिर प्रेशर पड़ता. पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि यस यू कैन प्रोजेक्ट दिस, बट एट द एंड अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे और अगर एक इंडिविजुअल पे फिर आ जाएगी कि जी एक इंडिविजुअल को इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि आप तेज खेलें और वो 3-4-5 दफा फेल हो जाता है, तो पाकिस्तान में हमने यही देखा है कि वो ड्रॉप हो जाएगा. नाउ टू बी एबल टू से कि नहीं इसको हम लीवे देंगे, इसको हम खिलाते जाएंगे, you can maybe do that with one player, but you can't do that with 6 because of the nature of Pakistan. मैं पाकिस्तान पैसिफिक बात कर रहा हूँ. मीडिया आप में ही बैठ के कहेंगे कि जी वो रन्स नहीं कर रहा, मीडिया बात करेगा, सारे बात करेंगे, तो you have to take into consideration that as well. Also, the other factor is that cricket is one of those games which is conditions पे बहुत ज्यादा dependent है. अब जैसे बॉल स्पिन होना शुरू हो जाए जहां पे बॉल बैट पे नहीं आ रहा और यू ट्राई एंड फोर्स द पेस, यू गेट इनटू प्रॉब्लम्स. आई थिंक जो हम 101 for 5 थे वो ज्यादा थी, बिकॉज आई डोंट सी द श्रीलंकन बॉलिंग एज अ थ्रेट. आई डोंट सी देम कि जी आपको वो 100 for 5 ऑन दैट सरफेस करें. दैट वाज बिकॉज पाकिस्तान वाज ट्राइंग टू फोर्स द पेस. साउथ शकील ने जो बैटिंग की, he did not force the pace. He batted, yes, he batted positively, but he made sure that जो उसकी स्ट्रेंथ है और जिस तरह वो इनिंग्स बिल्ड कर सकता है उस तरह बिल्ड की उसने. अगर द वन सिंगल आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन द वन एग्जांपल दैट कम्स बैक टू माय माइंड एवरी गेम इज शान मसूद. शान मसूद इज बैटिंग ब्यूटिफुली. जब भी वो आके बैटिंग करता है तो उसके बल्ले में बॉल भी लग रहा है, चौके भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. बट नाउ काफी मैचेस हो गए हैं वेयर ही इज थ्रोइंग इट अवे. 30 पे पहुंचता है आउट हो जाता है, 35 पे पहुंचता है आउट हो जाता है. तो शान मसूद का काम है रन बनाना, चाहे वो रोक के बनाए, चाहे वो छक्के मार के बनाए, चाहे वो सिंगल लेके बनाए. जब तक वो रन नहीं बनाएगा तो प्रेशर बढ़ता जाएगा. जो मर्जी आप कह लें, इतने मैचेस आप जब इतनी फॉर्म में होते हैं तो आपको रन बनाने पड़ते हैं. साउथ शकील की फॉर्म लगी हुई है एंड ही इज मेकिंग इट काउंट, and that's the way it should be. Yes, Pakistan way, yes, the brand of cricket you want to play, but at the end of the day वो bottom line से ही जज होगा. पाकिस्तान जीत रहा है तो it's all good, बैटर रन्स कर रहा है तो इट्स ऑल गुड. जहां पे फेलियर आया और फिर फेलियर में आप ये देखें कि जी ये थ्रो अवे कर रहे हैं विकेट्स या ऐसे लगेगा कि हाई रिस्क खेल रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ जाएगा. चलें एक मैच आप जीत गए ठीक है, but to say that we're swinging the pendulum and we're going to bat this way or we're going to play cricket that way, that'll take time and that'll take a lot of courage. मैं अगर होता तो मैं ना कर सकता. Okay, so like it will take time, it will take a lot of courage and probably a lot of patience on our part as well. लेकिन हमारे पार्ट से पेशेंस, ये आप भूल जाएं कि पाकिस्तान में पेशेंस होएगी. ये आपको पता है कि पाकिस्तान टेस्ट सीरीज हारेगा तो क्या रिएक्शन आएगी, ये आपको पता है कि पाकिस्तान 2-3 मैच हारेगा तो कैसी बातें होंगी. वो जो हम मतलब ये तो रोमांटिक बात है ना कि जी वी विल बी पेशेंट, ऐसे नहीं होगा.
हम पेशेंट, एक दो जर्नलिस्ट पेशेंट हो जाएंगे, लेकिन मीडिया विल नेवर बी पेशेंट इन पाकिस्तान. This we know from 1947. I guess so. I guess that pretty much settles the debate right there. So, ये तो आपका review हो गया of the first test. We have one more game to go. Obviously, if we win that, we win the series. We start off our World Test Championship cycle on a win. How do you see the next game going, Bazid bhai? Are you predicting Pakistan having the same kind of approach? And do you see any changes in the playing 11? I don't think there can be a change in the playing 11. I don't think you can drop anyone. Maybe अगर tactical change है कि fast bowler एक ज़्यादा खिलाना है, लेकिन I don't think कि Colombo's pitch will be dissimilar to Gauls' pitch. Maybe better for batting. So maybe then you can. But who would you sacrifice as a batter? ये भी है, अगर आपने एक bowler extra खिलाना है तो batsman आप कहाँ से कम करेंगे? लेकिन अगर इवन बिफोर द सीरीज मुझे लगा ऐसे कि इस वक्त पाकिस्तान की जो टीम है, स्पेशली द बॉलिंग, इवन दिस बॉलिंग, जो आपने दो फास्ट बॉलर और दो जेन्युइन स्पिनर एंड एन ऑलराउंडर खिलाया, दैट इज फार सुपीरियर टू श्रीलंका बॉलिंग. जब मैं श्रीलंका का अटैक देखता हूं तो एक जयसूर्य के अलावा मुझे लगता नहीं है कि ये अटैक 20 आउट कर सकेगा. And now Gaul was their fortress. Gaul was sort of the place that they would want to win, and they win regularly because the ball spins. I think if you can tackle Jayasuriya, then जैसे कि उस पार्टनरशिप में जयसूर्या को उन्होंने टैकल कर लिया, तो द रेस्ट ऑफ द अटैक में वो पोटेंसी नहीं थी. तो आई थिंक अगर आप ऑन पेपर मैन टू मैन अगर आप स्किल लेवल देखें तो पाकिस्तान की स्पेशली द बॉलिंग is far superior to Sri-Lanka's bowling, and उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है. I don't think they have somebody coming into the squad यही है, bowling options almost यही है उनके पास. कोई तेज बॉलर भी नहीं है और कोई ऐसा स्टैंड आउट स्पिनर भी नहीं है जो टीम में आए. तो I think this test match was the one where Sri Lanka had the best chance to win. For them, they even won the toss, they batted first, everything. But I think Pakistan is a little too strong for them right now. So we're predicting a Pakistan win, right? बिल्कुल, मैं तो if Pakistan plays anywhere near what they can do, Pakistan should win. Also, वहाँ पे again Colombo में it's more of a batting wicket, तो थोड़ा सा attritional test match होता है. उसमें if Sri Lanka want to force the pace, then more opportunity for Pakistan. Maybe reverse swing will come into play. All those factors, if they come into play, anything that comes into play. So if spin comes into play, I think Pakistani bowlers out-bowled Sri Lankan bowlers. If reverse swing comes to play, I think Pakistan has more potential with reverse swing. So going into that test match, Sri Lanka has all the questions, not Pakistan. Got it. Perfect. And we will just end the review, Bazid bhai, with a fan question, as we promised our viewers कि हम एक fan question लेंगे. And this question comes from Arkam Khan from Twitter, and he says that should we play 3 paces in Colombo, considering that the emerging Asia Cup conditions where pitches are flat? So is that something that you would go with? That's the only thing that Pakistan would consider. Going to Colombo, I don't think it will spin as much as Gaul. And even if it will spin later than it did at Gaul. So maybe you can look at a fast bowler. I think Amir Jamal hai. Amir Jamal. I would think Amir Jamal because he's got a little more pace, और also उसका बाउंसर तेज है, तो शायद वो ऑप्शन आप एक्सप्लोर करें. हसन अली भी, yes, he's also there, so maybe Amir Jamal, but that all depends if you want to then risk. मतलब अभी आपके पास 4 बॉलर हैं, अगर आप स्पिनर को ड्रॉप करते हो और तीसरा फास्ट बॉलर खिलाते हो, then you're depending के आगा सलमान आपको दिन के 15 से 20 ओवर करके दे. अब so if you can trust him with 15-20 overs a day, then maybe you change the side. But
that is the only, it's a very good question, because that is the only consideration right now Pakistan will have when they go to Colombo, when they look at the pitch and when they look at the surface. Do they want another pacer, or do they stick with this attack where just two pacers do? I think my gut feeling that they might stick with the same attack. All righty. That's brilliant. Thank you so much for your time, Bazid Bhai. Thank you so much for your expertise. And obviously, we hope that we can catch you after the Colombo test as well, and we'll catch you in the same mood, hoping for for a win for Pakistan. So thank you so much for your time, and I hope that you have a wonderful rest of your day. Thank you.